Hello, guys. Am I audible? Yes. ऋत्विक. Yes, sir. Yes, sir, you're audible. ओके, सो एक बार ही सब लोग अपनी ऑडियो क्वालिटी चेक कर लेना. So we are already एक बार. streaming, so I would suggest we Am I audible? Hello.
Hello, everyone. Welcome to our open mic event in collaboration with Penguin Random House. We'll be starting the event in a minute. Poetry is important. Poetry is important because it lets us appreciate the world around us. Poetry's strength lies in its ability to shed a sideways light on the world so the truth sneaks up on you. Poetry teaches us how to live. We at Sahitya DTU, along with Penguin Random House, welcome you all to the open mic event Pause Yours, followed by the book launch of Singing in the Dark. We're all tuned in today for an evening full of pleasure and art. And we can't wait to have our extremely talented artists showcase their work today amidst us. The first artist that we would like to invite is Shashank performing his piece titled Tum. Uh, Hello, am I audible, guys? Yes. Yes, you are. So hi, Shashank Pandey this side. Uh, so जैसा कि ये थीम है, मैं तो वैसे खैर हिंदी भाषी हूँ और ये इवेंट इंग्लिश पोइट्रीज के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी खैर जो मेरी रचनाएं हैं उनके साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा। जो पहली रचना है बहुत छोटी सी है, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, तो दो ही रचनाओं के साथ मैं आज ले आया हूँ यहाँ पर। और जो पहली रचना है छोटी सी है, मैं पढ़ना चाहूँगा, स्टार्ट करता हूँ कि हाँ इंतज़ार है मुझे, हाँ इंतज़ार है मुझे उस पल का जिस पल वो मेरी आरज़ू को अपनी पलकों से उड़ान दे, जिस पल वो मेरी आरज़ू को अपनी पलकों से उड़ान दे, मेरी हसरतों को अपनी होठों से मुस्कान दे। हाँ इंतज़ार है मुझे जब वो मेरी रातों से गुज़रे, जब वो मेरी रातों से गुज़रे और अमावस में चाँद दे। तो खैर ये मैंने लिखी उनके लिए थी, उनके लिए लिखी गई थी जिनके लिए सब लिखते हैं, अपनी-अपनी वालियों के लिए। और जैसा कि सबको पता है, कभी हर किसी का इश्क मुकम्मल नहीं होता, उसी तरीके से कुछ हमारे साथ भी हुआ था। ये तो एक बहुत पुरानी थी। जो मेरी आज की मेन कविता है, तुम, जिसके बारे में आशिता ने अभी-अभी कहा, मैं उससे शुरुआत करता हूँ और मेरे साथ बने रहिएगा थोड़े धैर्य से, ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी-सी बड़ी। तो ये लिखा है कि कुछ चीज़ें जो मुझको न हासिल न गुम, कुछ चीज़ें जो मुझको न हासिल न गुम, एक मकसद, एक ज़रिया, एक मंज़िल और तुम। क्या बात। ज़रूरी है बारिश बनाने के पहले, ज़रूरी है बारिश बनाने के पहले, एक सूरज, एक दरिया, एक बादल और तुम। खैर ये ऑनलाइन इवेंट है, तो यहाँ पर वाह-वाह तो थोड़ा अजीब हो जाता है, वरना कुछ कर तो सकते नहीं हैं, क्योंकि अभी ये वाह-वाह तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो मेरे ख्याल से सभी की आवाज़ आने लग जाएगी। तो ऐसे ही चलने देते हैं। तो ज़रूरी है बारिश बनाने के पहले, एक सूरज, एक दरिया, एक बादल और तुम। जो मिल जाए परियाँ भी आकर सँवर लें। ये लिखा है कि जब परियाँ भी ऊपर आकाश से नीचे आएँ, तो उनको भी किस-किस वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी, कि जो मिल जाए परियाँ भी आकर सँवर लें। एक बिंदी, एक लाली, एक काजल और तुम। जो मुझको समझते वो दुनिया में बस है, जो मुझको समझते वो दुनिया में बस है। एक मुर्शीद, एक शायर, एक पागल और तुम। मुर्शीद वो होता है, गुरु मान लीजिए, गुरु को, वो जिनके ही आगे ये दुनिया झुकेगी, वो जिनके ही आगे ये दुनिया झुकेगी। एक हाफ़िज़, एक आमिर, एक आकिल और तुम। गला के बनाया है जहाँ भर का चाँदी। ये मेरी सबसे पसंदीदा पंक्ति है कि गला के बनाया है जहाँ भर का चाँदी, एक मीना, एक बिछुआ, एक पायल और तुम। और ये आखिरी पंक्ति है जो कि मैं पढ़ना चाहूँगा और इसके बाद मैं विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है आज।
और मेरे ख्याल से मैंने काफी जल्दी जल्दी पढ़ दिया। मैं आंखों में भरकर भी छू भर ना पाऊं, मैं आंखों में भरकर भी छू भर ना पाऊं, ये चंदा, ये तारे, ये साहिब और तुम। के तो आशिरा। Thank you, Shashank. That was a beautiful piece of poetry, and we really enjoyed. Now, the next artist I would like to call is Rupika, performing her piece titled I Always Do. Am I audible? Yeah, Rupika, you're audible. Go ahead. Hello everyone. So I'll be doing my piece. I'll always do. So let's start without any wait. So how often do we compare ourselves with others? I don't know about you, but I always do. From good looks to no looks, boyfriends to friends, richness to glamour, job to perspectives, career to future, knowledge to destiny, family to marriage, luck to life. There isn't a page unturned, there isn't a topic untouched. The bliss on the other side brings remorse by my side. Would it be wrong to call it my emotions, feelings, thoughts, or sensations? Then perhaps I'll call it my imagination, certain to some extent, uncertain of the depths. Is it the flaws that make me saddened, or perfection on the other side? This entangled confusion never comes to a conclusion, but the responses are well determined. The feeling of gloom, anxiety, suppression, and depression are only left by my side. So, yes, I want to cut it right. Stop before the situation is tight. Is the grass greener on always on the other side? Or perhaps I've missed to look what's inside. A never ending smile, a courageous heart, a honest friend, a psychic strength, care for one another, forgiveness for all, superb family support, and respect for life. Isn't it enough to fill the jar upright? We often try to find beauty in the eyes of beholder and ignore the ones inside. Within us lives an older self, just dressed in a modern outfit we miss to see at times. In the light of moon, people often miss on a billion star who stand constant, consistent and ajar. So let me change my pitch. Maybe I wasn't selling it right. How often do you look inside? I don't know about you, but I always do. So this was a short piece from my end. I hope you like it and thank you for bearing me. No, we enjoyed it, Rupika. That was one very thoughtful and engaging piece. Thank you. Next up, we have a Hindi poetry being performed by Rudra, and it's titled Wo. Rudra is going to join us. We'll move on to the next artist, Abhishek, performing An Artist of Sorts. Abhishek, do we have you here? Yeah, I'm here. Am I visible? Yeah, you're visible and audible. You can start. Okay. Good evening, everyone. Really great to be here and honored to be a part of Sahitya. Really great experience. Yeah, so that was my intro. Well, talking about intros, do intros ever really end though? I mean, isn't your whole life just one big intro between you and the world? Just sit back and think about that while I introduce you all to an artist of sorts, one of words, of the quiet alike. An artist of sorts, one of words and of the quiet alike, a kid running from the rain and back into it. He is an open book, a mystery all the same, a boy like no other, and yet a part of the crowd. But when the crowd chased the light, he made friends with night. He spends his days covered, but nights chasing the stars. He spends his days covered, but nights chasing the stars. A misfit, I'd say. He lives in one world and dwells in another. He is the darkest of nights, the best of lies, the worst kept secret, and the saddest of sights. They say every artist has a masterpiece. They ask him about his. But silence is all they get for an answer. For his belongs to a world only his, not theirs. He is a helper and a self seeker nonetheless. He abhors what he loves the most. He dreams of the unknown, but a dreamer, he is not.
He dreams of the unknown, but he's not a dreamer. There he rests, in a far off land, in the woods, beneath the trees, flowing with the breeze. He gazes at the night sky and hums a silent melody. He smiles at the stars, and they, for him, they do smile back. People say he is lost, but little do they know, no one has ever been more found. Thank you. Thank you, Abhishek. That was one nice piece. And I think you have a lot of fans in the chat boosting you up. I would request the Hive people to be there for the other performance as well. And next we have Rudra. He's finally here performing his piece titled Oh. Am I audible? Yes, Rudra, you're audible and visible. Good to go. या तो मैं 2 लाइनों से शुरू करता हूँ बस, ठीक है? फिर मैं अपना वो परफॉर्म करता हूँ। फ़रेब दुनिया झूठ आसमान, फ़रेब दुनिया झूठ आसमान, न जाने कितने ही गहरे राज़ देखे, मैं जब भी गौरैया बन समझने बैठा तुम्हें, तुम्हारी आँखों में उड़ते कई बाज़ देखे। सो मैं शुरू क्या करता हूँ। बात, क्या बात। इसका नाम है वो, तो बस मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, इसे शुरू करता हूँ। वो मुझे द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 की सीढ़ियों पे मिली। उसने मुझे सुनाए कुछ नए पंजाबी गाने, मैंने उसे सुनाई कुछ नई कविताएँ। हम दोनों थोड़ा और करीब आए और फिर एक दूसरे को चुनने के फैसले पर नाज़ करने लगे। मैं उसके बारे में कुछ कहूँ, तो वो यूँ ही के सिलसिले से शुरू हुई और आखिर क्यों का सवाल हो गई। फिर वो एक रेड टॉप और प्लाज़ो में अपनी फ्लैट की सीढ़ियों पे मुझे कई बार मिली। वो कौन थी, कैसी थी, इस बारे में तो नहीं पता, पर गौरव सोलंकी की किताब से कहूँ तो अगर चाँद पर कहीं सर्दियों की धूप होती होगी, तो हाँ, वो ठीक उसी दोपहरी से आई हुई लगती थी। फिर एक जनवरी की दोपहर जब मेज़ पर पड़े थे चाय के 2 खाली कप, बिस्तर में पड़ी थी बॉस के बालों की सिलवटें और वो अचानक उठी और चली गई। मैं उसे ढूँढता रहा बेतहाशा। भरी गिटार की 2 महीने की फीस, अटेंड किए जीवन सुधारने के कई सेमिनार, नेटफ्लिक्स पर देखे कुछ नए शोज़ और बदल दी पूरे गानों की प्लेलिस्ट। 21 दिनों में किसी आदत को बदला या बनाया जा सकता है, ये बात मेरे लिए 21 महीनों से गलत साबित होती रही। मैं एक घर में हूँ, जिसमें एक 3 मुँह वाला पंखा चल रहा है धीरे-धीरे, इतना धीरे कि उसकी रोटेशंस गिनी जा सकती हैं। सीएफएल बल्ब की सफ़ेद दूधिया रोशनी चढ़ रही है दीवार पर ठीक किसी खटमल की तरह और ठीक सामने मौजूद है एक लोहे की अलमारी जिसमें मौजूद है हमारे रिश्तों के सभी दस्तावेज़। मैंने एक कागज़ अपनी बाईं जेब से निकाला और उस पर लिखा, आकाशा। मैं जो उसे उसके जाने के बाद ठीक से समझा हो उसने जो मुझे उसके जाने के बाद ठीक से समझा होगा, वो बस इतना कि जैसे किसी न्यूज़ चैनल पर पुल गिरने के बाद जान, माल और जज़्बातों की कितनी हानि हुई है, इसे बस रिमोट से चैनल बदल दिया जाए और उतना ही समझा जाए। जीने के लिए चाहिए थोड़ा ऑक्सीजन, थोड़ा पानी, थोड़ा खाना। मौत की खबरें सुनते हो ना तुम रोज़ टीवी में, अखबारों में, सड़क हादसों में, पर खबर नहीं सुनी होगी तुमने कि कोई मर गया प्रेम की कमी से भी। जीने के लिए चाहिए थोड़ा ऑक्सीजन, थोड़ा खाना, थोड़ा पानी और थोड़ा प्रेम भी। कुछ सालों में मैं उससे उतना कमा पाया था कि जब भी मुझे उससे बात करने की कोशिश करी, तो उसका 10 अंक वाला नंबर हमेशा 1 घंटे के बाद व्यस्त रहता था। मुझ में और उसमें शायद उसी दिन अंतर आ गया था। उसी दिन दूरियाँ आ गई थी जब मुझे दोस्तोवस्की को पढ़ना था और उसे परमेश वर्मा पसंद था। बीते चंद महीनों में वो मेरे सूरज को गाली देती रही और मैं उसके जुगनू की लाश को पूछता रहा। और जो आखिरी बात मेरी उससे हुई वो ये कि मैंने उससे पूछा कि दुःख की क्या इक्वेशन है? उसने कहा पता नहीं, उसे बस अकेला छोड़ दिया जाए। और बस वहीं से शुरू हुआ मेरा साधारण और उसका विशेष हो जाना। दैट्स इट बस इतना ही। Thank you, बहुत Rudra. रुद्र, बहुत We love थैंक यू। your piece. Next up, we have Rishabh performing a Hindi piece again titled Raat. Hello. Yes. Hello, everyone. Hi, Ashita.
Hello, Rishabh. You're good to go. All right. So generally I write in English, but today for the theme I thought that Hindi would go better because this piece is something like that. So without further ado, I'll start. एक रात स्याह या काली नहीं रोशनी से भरी हुई आज दिवाली या ईद नहीं है लेकिन फिर भी खिड़की से तेज रोशनी उस आदमी के चेहरे पे पड़ रही है सड़क पर सिर्फ कुत्तों का वर्चस्व है और स्ट्रीट लाइट ने मानो सौदा किया है सूरज से कि रात में यहाँ सिर्फ उसका आधिपत्य रहेगा खुली खिड़की के सामने वो बेजान सा आदमी बैठा है हाथ में गोल्ड हाँ वही सिगरेट का जो ब्रांड होता है ना वही लिए जो वो हर रोज एक हफ्ते से जलाता आ रहा है जिसे उस और हर रात तब से थोड़ा थोड़ा फूक लेता है और अपने इश्क को उड़ते धुएं में झांकता पाता है टेबल पर कुछ बिखरे कागज हैं कुछ सफेद कुछ पीले कुछ एकदम क्रम्बल्ड मानो कि उनका सारा गुस्सा उन कागजों पर निकाला हो गलती किसकी थी उसकी उसके इश्क की या किसी और की पता नहीं कुछ पन्नों पर आड़ी तिरछी लकीरें हैं शायद वो तस्वीर बना रहा था किसी का हर रात वो यही करता है थोड़ी सिगरेट फूकता है अपने इश्क को धुएं में ढूंढने की कोशिश करता है और अपनी एक और कविता जलाता है कुत्ते शांत हो गए हैं सूरज निकलने वाला है और रोज की तरह वक्त हो गया है उसके सोने का क्या पता सपनों में ही वो आ जाए थैंक यू सो मच Thank you, Rishabh. Personally, really liked your piece. Next up, I would like to call Khyati. She's performing an English piece titled How I Met Metonia. Khyati, are you here with us? Yeah. Cool. I'm audible, right? Yeah, you're good to go. All the best. Yeah, thanks. So, the piece that I'll be presenting today is called How I Met Metanoia. And so it goes. Okay. It was the best night ever. I don't remember the song, I don't remember the lights. The eyes dwelled in mine, those big, pretty eyes. I am finally enough. Life was rainbows and chocolate. It was spring all around. But soon enough, the flowers, they stopped growing. It was a dire pale blue sky. Soon enough, I wanted to be alone. Soon enough, I became alone. Listening to the sulk, it felt nice. There was a shrill silence all around. Silence as bright as the sun slipping underwater. Soft as the touch of moonlight on concrete. Promise as heavy as the storm clouds gathering overhead. So it goes. So you keep tending. Okay, listen. The pearl pale fire of the smile floating faceless. Our child selves won't recognize us again when we meet them. There's some strange desolation in knowing our child selves won't recognize us when we meet them again. How we broke the vow we made with them to always live. And by living, I mean, well, that is quite controversial, isn't it? We all have become something we all wanted to be else something. Here lies the remains of those of a child's dreams. Here lies the memories of the journey of tormented thoughts. Let's pay respect
to those glistening eyes. With dreams, ambitions, hope, let's make up with it. Because it would scar it from ever dreaming, running after people seeking worth, not living. I'm sorry. Thank you. Thank you, Kathy. That was very beautiful and thoughtful. We next up have Hanshu performing Karwan. Hello, everyone. Am I audible? Yes, you're good to go. All the best. So, जैसा कि अभी सब शशांक ने बताया कि समय की सीमा सबके सामने स्पष्ट है, तो बस एक छोटी सी पीस के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो क्या चल रहा है अभी देश में? अभी देश में चल रहा है प्रोटेस्ट। इसका प्रोटेस्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट। आपसे मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप किसी भी आइडियोलॉजी के हों, किसी भी लोकतांत्रिक सेवाओं को सपोर्ट करते हो, आप बस ये सुनिए। मैं शुरू कर रहा हूँ कि एक शोर सी चुभन हूं मैं, एक शोर सी चुभन हूं मैं, एक मुख्तलिफ अंदाज हूं, बेताब थी घुटन में मैं, इस देश का मैं नाज हूं, मैं लाठियों से पिट रही सिमट रही शमशान हूं, फिर भी बुलंद हूं, मैं एक किसान की आवाज हूं। और अब जिस पीस के लिए मैं यहाँ पे आया था, दिस गोज बाय द नेम ऑफ कारवा। तो जो भी चल रहा है पिछले 1-2 साल से, ये उसका एक समअप है। पहले हमने जेएनयू प्रोटेस्ट देखे, फिर हमने जामिया प्रोटेस्ट देखे, फिर हमने एनआरसी प्रोटेस्ट देखे। दिसंबर के महीने के और प्रोटेस्ट में एक इश्क है, जिसके 2 विलन है, एक ठंड, दूसरा आप गेस कर सकते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि कारवां अभी चला है यारो, कारवां अभी चला है यारो, कफन लिए मुंह पे मुस्कान सजाए, कि गौरव और हिमाकत में फर्क भूल बैठे हैं, अब इन अंधों को रास्ता कौन दिखाए। मंदिर मस्जिद खूब टटोला, मंदिर मस्जिद खूब टटोला, मंजीरे भी हमने बहुत बजाए, हर ढलता दिन उस मलाल को घूरता रहा, दिल का था जो वजन बढ़ाए। भूखे जिस्मों की इस दुनिया में रूह टटोलना कौन सिखाए, भूखे जिस्मों की इस दुनिया में रूह टटोलना कौन सिखाए, दंगों में मैं भी मारा जाऊंगा, दंगों में मैं भी मारा जाऊंगा, लोग भागे फिरते हैं यहाँ अपना धर्म बचाए। बेबसी रास्ते में पड़ी मिलेगी, बेबसी रास्ते में पड़ी मिलेगी, भ्रष्टाचार अपना दामन फैलाए, नफरतें गुहार लगाती दिखेंगी और रोशनी पर हावी दिखेंगे साए। बचपन से लेकर जवानी तक, बचपन से लेकर जवानी तक, समझदारियां छोड़कर अपनी खुद की मनमानी तक, ये सब एक सियासी जाल है। इस आम जनता को कौन समझाए कि गौरव और हिमाकत में फर्क भूल बैठे हैं, अब इन अंधों को रास्ता कौन दिखाए। धन्यवाद। Thank you, Thanshu. Next up, I would like to call Anirudh, who's going to perform a song for us. बहुत खूब धांशु। Hey everyone, good evening. Am I clearly audible? Yes, Anirudh, you're audible and visible. Could you just please let me know if you can hear the background music? I'm just gonna play it. Just tell me. Yeah, sure. Was that Yeah. audible? Yeah, Okay, that's cool. audible. You're good to go. All the best. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine.
You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm losing, I'm winning. 'Cause I gave you all of me. Sorry. And you give me all of you. Ah. Hello? That was really great. Really. Okay, wait. I'm gonna sing one more song, so just wait 1 second. Yeah, you can go for the next piece as well. Okay, so I'm gonna start Khamoshiya. खामोशिया आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें हिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ, क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा, खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ. Okay, thank you. Thank you, Anirudh. I would now like to call up Ansh to perform his piece titled Jeevan Shadi. क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? Ansh, you're only audible. We can't see Okay, you. am I Yeah, visible now? yeah. Okay, Good go. ठीक है. So आज का जो थीम है वो है लॉकडाउन ऑफ इमोशंस. मगर इस लॉकडाउन के बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करेंगे एक अपराधी के बारे में. अब इस अपराधी का हम नाम नहीं ले सकते कि भाई आजकल जो अपराधी हैं बड़े विचित्र किस्म के आते हैं. वो सड़क पे घूमते गुंडे मवाली नहीं होते, सूट बूट पहने कुर्ता पजामा में बैठे बड़े बड़े नेता और दिग्गज होते हैं कि हमारे बारे में पता चल गया तो सब फंस जाएंगे, इसलिए उनका नाम नहीं लेंगे
और इस बात पर गौर फैलाते हैं कि उन्होंने कैसे हमारी जीवन शैली बदल दी। क्योंकि सलाखों के पीछे जीना हर रोज की कहानी है। अरे भैया, सलाखों के पीछे जीना हर रोज की कहानी है। जो अपराधी का डेरा था वो घर की चार दीवारी है। सोच रहे हो, जहां अपराधी रहते थे, जो अपराधी का डेरा था वो घर की चार दीवारी है। पहले चोर होते थे बंद, आज बचने का जरिया है। इंसान बचने के लिए क्या कुछ नहीं करता भाई। पहले जहां चोर होते थे बंद, अब वो बचने का जरिया है। अब अपने अपनों से दूर भी रहें, बंद डिब्बों में जिंदगी बितानी है। देख लो, बंद डिब्बे में ही पड़े हैं। अब अपने अपनों से दूर भी रहें, बंद डिब्बों में जिंदगी बितानी है। गुनहगार खुला घूमेगा, मासूम को अपनी जान बचानी है, बेकसूर को अपनी जान बचानी है। और खासकर 50 से 80 साल की उम्र के लोगों को, जिनको कोई बीमारी है, उनको भी अपनी जान बचानी है। मगर हम ठीक हैं, हम मजे में हैं। अरे भैया हम ठीक हैं, अरे बाबू हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। इन सलाखों के पीछे माना ये थोड़ी बेईमानी है, माना ये उन गुंडों की मनमानी है कि बेकसूर मुंह छुपाए घूमे, पर गुंडों की सरेआम मनमानी है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम सब बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते भैया, क्योंकि ये काल कोठरी भी जो है वो घर आंगन की कहानी है। ये काल कोठरी भी जो है वो घर आंगन की कहानी है, घर आंगन की कहानी है। कुछ इसी प्रकार बीता है ये जज्बातों से भरा लॉकडाउन। धन्यवाद। वाह, मजा आ गया। Thank you, Anil. बहुत ही उम्दा। Thank you so much. One more thing, I would like to thank all the people who are typing Anshopi in the chat. Thank you so much, especially the people from DAV Shresth VR and to Team Sahitya as well. Thank you so much. Thank you. I would now like to call up Neha to perform her piece, The End of Me. Hello, am I audible and visible? Yes, Neha, we're good to go. Good evening, everyone. I'll be reading my piece. It's called The End of Me. So here it goes. Running wild and free. What has been your point of friction? Don't tell me you haven't stopped running. It gets tiring and you wish to live in the moment instead of chasing the next. So you stop, and stop. You use full stops now instead of commas. You end your sentence with with a period instead of an and. You stopped. So tell me, what or who was the force that stopped you? Did I ever tell you how confusing it gets in my head? I try to weave up words like I'm knitting a sweater, but I end up making a weird shaped muffler. I write these words like I'm writing a journal. No, I do not own one. I am a millennial who writes what comes to her head and puts it out on social platforms. It drives me crazy how I blog my life events, like the stories that never happened, like the one above talking about friction. Lights above me bright and killing like stars in a sky, a series of frightening dreams taking over my thoughts. Have you seen your demons? Are you friends with them? What do you talk about? I told them I'm scared of them, so they started visiting me every day to make sure I am not scared of them anymore. I see the blood on my hands, and my demons tell me it's all in my head. And I won't see the blood if I don't want to. I'm going insane. I set the house on fire again. I made sure that every piece of wood was burnt to ashes.
And then I rebuilt it with white tiles, white painted wood. I made sure the stained glasses were melted, and now I replaced them with transparent glass, transparent windows. I covered the house in white curtains and white daisies in a white vase. White is the color of peace. So I started making peace with myself, but I began with my surroundings first, last, and then again, because trying to do it with myself has failed over and over again. Thank you. Thank you, Neha. Amazing. Next up, we have Ria to perform for us. Hello, am I audible? Yes, Ria, you're visible and audible. Yes, okay, perfect. I have a set of 2-3 songs only, so I won't bore you guys a lot. I'll start off with a very well-known song. कैसे कहे क्या है सितम सोचते हैं अब ये हम कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे करते तो हैं साथ सफर फासले हैं फिर भी मगर कैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे पास है फिर भी पास नहीं हमको एक अंदाज नहीं शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियां सारे सहन नजारे हैं खोए खोए वक्त के धारे हैं और दिल में कोई कोई सी बातें हैं हो कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरान है कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरान है फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमे So that was Josne Bahara, and I'm sure सबने सुना ही होगा. The next song is also a very famous song, and it's called Coolness by Pratik Kohal. When I feel cold, I keep you close. And if I could hold you and take you home, and when the night your toes touch mine, sing you to sleep. If you don't mind to keep, I wish I could leave you now, but my heart is on my. My days they begin with your name and nights end with your breath. I wish I could leave you my love, but my heart is on me. My days they begin with your name and nights end with your breath. With your breath. Okay, so that was coldness, and as I said, it is really cold. I'm also a mess. I will end my performance here. Thank you for having me. Thank you, Ria. Loved it. Next up, I would like to call Thanshu to perform his piece once again. Can I keep my video down?
If it's possible, I would request you to have it on. Otherwise, we can go otherwise. Okay. So this is a piece I wrote a few months back. Shashank is a school friend. Shashank would know. Shashank and I met a couple of months back, and we were discussing about like this March and like the next year, 2021 March end, will be 5 years when we left school, and how we remember each and every memory of it, and each and everything that we remember, good and bad, and especially the bad ones, because now we know that it doesn't matter. तो शशांक, अगर तुझे मेरी आवाज आ रही है तो सुन. कुछ फूल मत खोली भाई बुरा. सुन के अपनी हर हार को बनाकर एक खिताब रखा है, कि अपनी हर हार को बनाकर एक खिताब रखा है, हर ख्वाहिश शराब को बहरहाल कर एक किताब रखा है, कि अपनी हर हार को बनाकर एक किताब रखा है, हर ख्वाहिश शराब को बहरहाल कर एक किताब रखा है. ये कसक दूर से चंद पन्नों की दिखाई पड़ती है, ये कसक दूर से चंद पन्नों की दिखाई पड़ती है, फिर किसी रोज बताऊंगा कि कितने आंसुओं का हिसाब रखा है. अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. और एक ये रचना है जो मैंने बहुत तंग हो गया लिखी. इतनी मतलब एक्सपेक्टेशंस और चीज डोरिटोस सब कुछ भरा हुआ है लाइफ में. तो उस पे एक रचना है कि एक शख्सियत का फेर अब्र है. अब्र का मतलब होता है बादल. एक शख्सियत का फेर अब्र है उस लालसा के काबू में, जो उंगलियों पर ठहरा है कई हसरतें कैद करके. धागों सी है ये मुलाकातें, धागों सी है ये मुलाकातें, जो कब टूट जाए मालूम नहीं. उन आंखों को याद कर लेते हम अगर दीदार मुकम्मल करते. कहने को तो दो ही बातें थी, कहने को तो खैर दो ही बातें थी, जो आज फिर नहीं कह सके और लौट आए. उलझनों में लिपट कर रह गए बस इंतजार का इंतजार करते करते. वक्त जितना भी था अच्छा था, वक्त जितना भी था अच्छा था, जिसकी कमी को दीवार समझ बैठे. दौर बन के गुजर गया है अब वो फरियाद करते करते. और वो शख्स मेरे लिए था, है या होगा, वो शख्स मेरे लिए था, है या होगा, ये एक सवाल है जिसे मैं दफन कर आया हूँ. थक गया था इसके जवाब का इंतजाम करते करते. एक शख्सियत का फेर अब्र है उस लालसा के काबू में, जो उंगलियों पर ठहरा है कई हसरतें कैद करके. थैंक यू. अरे 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 अरे. Thank you so much. Shashank sir, I would like you to go next. Okay, so am I visible or not, guys? I think. Yes, sir, you're visible and audible. Okay, so we have. तो अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, जो हमारे जिनके साथ हमारा पुस्तक विमोचन है, द बुक लॉन्च, विच वी ऑल आर वेटिंग फॉर. थोड़ा सा टाइम है उसके लिए, तो अभी हमारे पास टाइम है कुछ बातें करने के लिए. और अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, इफ तो अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं. लाइक अगर क्योंकि वाह नहीं कर सकते, तो आंखों के एक्सप्रेशन से ही थोड़ी बहुत हमें इज्जत दे दीजिए, या फिर थोड़ी बहुत तारीफें कर दीजिए. बहुत बहुत खूब. थांशु बहुत अच्छे बैकग्राउंड में बैठा हुआ है. द बेस्ट बैकग्राउंड. ये दिस लुक्स लाइक मतलब हाँ, ये पैंडेमिक में है ये बंदा. हम लोग सब तैयार होके बैठे, ये बंदा अभी मुझे लग रहा है मोमोज खा के बैठा होगा. मोमोज खा के बैठा होगा. कॉफी. So we have a little bit of time. और अच्छा, एक जैसा कि मैं मतलब साहित्य में पढ़ता रहता हूँ, छोटा सा शेर है, मैं ना वो पढ़ देता हूँ. थांशु को याद होगा ये वाला सीन. तो हुआ ये था कि मोहतरमा लाइब्रेरी में बैठी थी हमारे स्कूल में. जब हम स्कूल में थे तो मोहतरमा हमारी जो थी, वो हमारी नहीं, मतलब जो मोहतरमा थी वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी. हमारी तो कभी हो नहीं पाई.
तो उसके लिए 2-4 पंक्तियाँ लिखी थी कि जुल्फ़ों को एक झरोखे से पीछे करने की उसकी लाख कोशिशें नाकाम रहीं। कि हुआ यूँ कि जब वो किताब पढ़ रही थी तो बार-बार जुल्फ़ें आगे आ जाएँ और हम देख रहे थे ये सब। क्या होता था ना कि जो लाइब्रेरी पीरियड होता था कि 2 क्लासेस साथ में ही लाइब्रेरी जाती थी। तो बैठे हुए थे। जुल्फ़ों को एक झरोखे से पीछे करने की उसकी लाख कोशिशें नाकाम रहीं। तो जब मैंने देखा तो अब मुझसे रहा नहीं गया। तो हमने क्या किया कि हम गए और ऐसे पीछे कर दी। तो वही लिखा था कि जुल्फ़ों को एक झरोखे से पीछे करने की उसकी लाख कोशिशें नाकाम रहीं, मेरी उँगलियों ने वो काम कर दिया। हम गए और उठा के पीछे कर दिया तो मैंने कहा मेरी उँगलियों ने वो काम कर दिया, जिसके लिए वो बेवजह परेशान रही। है ना? तो थोड़ी बहुत जो भी अभी तक मुझे समझ में आई है, क्योंकि हम कवि तो नहीं कहेंगे किसी को भी, मतलब खैर मैं तो अपने को कवि नहीं कहता क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं अभी। कविताओं से कविता जो लिखते हैं जिन्होंने आज जिनका बुक लॉन्च है, तो इट्स लाइक कि पहली बात तो कविता लिखना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर उसको एक कलेक्टिव बुक में तब्दील करना, उसके बाद उसका प्रकाशन, उसको मतलब पब्लिश करना बहुत बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता है। तो मैं पहली बात तो इन लोगों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने आज ये इवेंट रखवाया है, साहित्य ने रखवाया, पेंगुइन सोसाइटी को कहूँगा और ख़ासकर हमारे ऑथर्स को बोलूँगा कि बहुत-बहुत बधाई आप लोगों ने ये अचीव किया क्योंकि बहुत लोग रहते हैं जो लोग लिख के छोड़ देते हैं। मतलब उनका लिखा हुआ होता है वो कहीं गुम हुआ जो हम लोग पढ़ते हैं एनोनिमस, वो कई ऐसे शेर होते हैं जिन्होंने कहीं लिखा था, वो भूल गए और वो चल दिया। तो यही सीन होता है। तो पहली बात तो उनको बहुत-बहुत बधाई। तो मैंने जो लिखा था वो मुझे याद है और मैंने लिखा भी हुआ है क्योंकि आजकल तो ये हो गया है कि चलन हो गया है नोट्स का। हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं। मुझे डायरी में लिखने की आदत है। मुझे लगता है कि जो डायरी में हम लिखते हैं ना, जो उसकी खुशबू होती है डायरी की, वो नोट्स में नहीं मिल पाती। है ना? कि जो डायरी में जो हम लिखते हैं और जो डायरी की जो खुशबू होती है वो कहीं आप वो एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हैं। तो एक छोटी-सी है वो और ख़ैर क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ा आशिक किस्म का रहा हूँ, तो मैं लिखता भी उसी तरीके से हूँ और एक डिप्रेशन पे लिखी थी, वो लेकिन मैं सुनाऊँगा नहीं। यहाँ नहीं किसी और जो साहित्य के लोग हैं वो सुन पाएँगे और किसी दिन उसका एक बार और कहीं पे सुनाएँगे। तो ये लिखी है जो छोटी-सी है कि ये भी तुम पे लिखी है कि कड़कती धूप में एक छाँव की तरह हो तुम। कड़कती धूप में खैर आज तो निकलनी ही नहीं, लेकिन कड़कती धूप में एक छाँव की तरह हो तुम, तपती गर्मी में झिलमिलाती बारिश की तरह हो तुम। जीवन की हर तपिश में शाम की सर्द हवा की तरह हो तुम। मेरी हर हार में जीत की मचलती लहर हो तुम और मेरी हर नाउमीदी में उम्मीद की एक लौ की तरह हो तुम। हाँ सच है ये कि धड़कनों के सफर में मेरी हर गुजरती सांस की तरह हो तुम। है कि नहीं? तो अभिषेक एंड अंश, तो मुझे आप दोनों दिख रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत उत्सुक हैं, कुछ ना कुछ आपके पास भी है और सुनाने के लिए। तो अगर अंश अगर पहले अभिषेक को बुला लेते हैं क्योंकि ए और बी अल्फाबेटिकली देखा जाए तो अभिषेक पहले आएंगे। अगर अभिषेक के पास है कुछ, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से अभी हमारे मेजबान लोग जो है वो थोड़ा सा टाइम है। जी भैया, सुनाई दे रहा हूँ? बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल। सुनाने को तो भैया जो था वो सुना चुके, बस यही कहना है आपकी शायरी सुन के सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और होप करते हैं आपसे सीख के। अच्छा तो अभी अभी आपके पास, चलिए कोई बात नहीं। तो अंश, एक छोटी सी कहानी है, मतलब एक एनेक्डोट है लॉकडाउन से रिलेटेड। क्या सुनाऊं आप बिल्कुल सबको? बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत अरे है। ठीक है। तो और ऐसे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अंश की भैया अगर आप स्वागत नहीं भी करोगे तो भी मैं सुना दूंगा, ठीक है? मैं आया हूँ सुनाने के लिए और सुना के जाऊंगा। तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं फिर भी भैया मैं तो सुना के रहूंगा, ऐसे कॉन्फिडेंस पे रहिए। चलिए बिल्कुल। शुरू हो जाए। तो
असल में लॉकडाउन में ऐसा होता है ना कि सब लोग घर पे ही थे, तो ड्राइंग रूम पूरा हौच पौच हो रखा था, सब वहीं भरे हुए थे, हमें प्राइवेसी नहीं मिल रही थी, जगह नहीं मिल रही थी कहीं पर भी। तो मेरे मेरे घर में ना सबसे दूर वाले कोने में, मतलब ऐसे तो घर छोटे छोटे ही होते हैं, मगर उसमें भी थोड़ा सा बाहर की ओर बना हुआ है जो बाथरूम है वो। तो अब मेरे को अपनी एक महिला मित्र से बात करना था। अच्छा, महिला अरे मित्र। आप ठीक है। आशिक मिजाज के हो, हम भी हैं भाई। बिल्कुल, नहीं, ये तो मतलब काफ़ी ज़रूरी ठीक है। होता है। तो बात करनी थी, मैं बाथरूम गया क्योंकि सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, प्राइवेसी की तो वाट लगी हुई है। तो मैं बाथरूम गया, वहां जाके मैंने कॉल लगाया। कॉल लगाते जैसे कॉल उठा, मैंने बोला हाय बेबी, उधर से किसी आदमी की आवाज आई। मैं कहा, ले। अरे, अरे ये क्या फिर हुआ? फिर अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को तो डर लग गया कि आज तो ससुर जी ने पकड़ लिया। फिर इसके बाद जो ससुर जी, ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है यहाँ पे, ऑप्टिमिज्म देख रहे हो आप लोग कि ससुर जी ने पकड़ लिया। यही चाहिए जिंदगी में, बस अरे यही अरे भाई, गालिब की दो पंक्तियां हैं कि दिल ही तो है संगे दर किश्त से भरा है, क्यों रोएंगे हम हजार बार, बिल्कुल। कोई हमें सताए क्यों। ऑप्टिमिज्म तो होना ही चाहिए, हम रो भी लेंगे। तो उसमें क्या हुआ ना कि मैंने उसके बाद, आई एम वेरी सोशल, मतलब तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, यही कहानी बताने के लिए कॉल किया। उन्होंने उठा लिया, तो मैंने कॉल किया अपने दोस्त को, दोस्त ने उठाया कॉल कि, और जैसे दोस्त ने उठाया फिर वही आवाज। माइक ऑफ हो गया, माइक ऑफ हो गया। मैंने दोस्त को कॉल किया, दोस्त ने जैसे ही कॉल उठाया फिर वही आवाज आई, ससुर जी इधर भी। अब ना, जिस काम से बाथरूम गया था वो तो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मगर जिस काम से जाते हैं वो हो गया। अरे हंस क्या रहे हो भाई, गीला हो गया था मैं पसीने से, नहाने जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बाथरूम गया था। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने 4 लोगों को फिर फोन किया, सबको, दोस्तों को बताने के लिए कि ऐसा हुआ भाई, देख लो मेरे साथ कुछ गेम कर रहे हैं ये नेटवर्क वाले। तो फिर चारों पे सेम आवाज आई। मैंने कहा ऐसा कैसे, सबका बाप एक। फिर उस दिन मेरे को 2 बातें पता चली कि मेरे सारे नालायक दोस्तों ने जियो का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और दूसरी बात ये थी कि जिसकी आवाज आ रही थी वो रिश्ते में सही में हमारे बाप लगते थे, नाम था उनका अरे शहनशाह। अच्छा। ओके, ओके, समझ गया अभी। बहुत ही रोचक कहानी, अंश। ओके, सो वी हैव अनिरुद्ध ओवर हियर आल्सो। अनिरुद्ध, आई नो आपने गाना गाया था, अब आपके पास कुछ सुनाने के लिए, क्योंकि अनिरुद्ध हमारे साथ काफी पहले से जुड़े हुए हैं, तो मैं अनिरुद्ध को आमंत्रण देना चाहूंगा। मंच तो नहीं है, वर्चुअल मीट पे। थैंक यू शशांक भैया। तो मैं शुरुआत करता हूँ मेरे पीस से। कैमरा ऑन कर लो यार भाई, जो भी कर सकता है अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। इस जिंदगी की ख्वाहिशें भी कुछ ऐसी थी कि ये मुसाफिर अपने दिल की फरमाइशें पूरी ना कर सका कभी, कि ये जो पैगाम था नूर का, जो मैं समझता था ये था ही दस्तूर मेरा। जब 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 जिंदगी की उस राह ने पुकारा, मैं यूं ही चला आया। न डर था न अंधकार था, मैं यूं ही चला आया। ये वो राह थी, ये वो राह थी जो न देखी थी न सोची थी। ये दिल कभी कभी रोता है, मैंने समझाया दुनिया में अक्सर यही होता है। ना जाने वो कौन से राज थे जो किसी की यादों में समा गए, ना जाने वो कौन से राज थे जो किसी की यादों में समा गए, पर वो यादें तो हंसी थी जो किसी को आज भी जिंदा रखती है। हमने तो हमने तो उनकी बातें भी यूं ही इस दिल पे लगाई, हमने तो उनकी बातें भी यूं ही इस दिल पे लगाई, जो मेरी जिंदगी का एक पल भी मेरे साथ ना गुजार सके। लेकिन लेकिन जो यह एक बात है, अभी भी एहसास सी है, ये भी एक खुशबू है जो कुछ कदर बेआवाज है। ना जाने
ये दिल का कैसा राज है। इस दिल ने सिर्फ इतना नहीं सहा कि इसने कुछ नहीं कहा। ना कहीं है वो जमीन, ना कहीं है वो आसमान जहां मैं खुद को ढूंढ लूं। जरा आईने में देखा तो पता चला कि मुसाफिर की वो राह भी अपनी ही थी और मंजिल भी खुद के अंदर ही थी। इस दौर में कुछ ऐसा लगा कि मंजिल सी मिल गई, पर वो भ्रम पे भ्रम था जो मैं ना जानता कि जिंदा हूं मैं जब मैं सिर्फ जीता नहीं। गौर फरमाइए कि जिंदा हूं मैं जब मैं सिर्फ जीता नहीं, पर जिंदा हूं मैं जब मेरा सफर ही मेरा लक्ष्य है। कभी आवाजों ने पुकारा, कभी आवाजों ने पुकारा, कभी किसी की खूबसूरत नजरों ने गिराया। कभी लगा अंदर से सब खत्म हो गया, पर अंदर से एक आईने ने परछाई दिखाई। ये परछाई उसी मुसाफिर की थी जो कभी अपनी राह पे चला था। तब जाना, तब जाना कि ये राह ही मुसाफिर को बनाती है और ये सफर ही जिंदगी है। थैंक यू। बहुत खूब अनिरुद्ध, बहुत खूब। ओके, सो आशिता, continue. Thank you, Anirudh. Next up, we have Divyam to perform for us. Divyam, are you here? Yeah. Divyam, you're next. Okay, right now or after someone? Yeah, you're good to go right now. Can we have you on camera, please? Yeah, sure. Just a second. Yeah, thank you. Yeah, so am I visible? Yes, Divyam. Yeah. So this is one piece that I wrote some time back, and so it goes like, वो सिलसिला था प्यार का तकरार का। वो सिलसिला था प्यार का तकरार का, जीत से प्यारी हार का, फूलों सी कोमल मार का, एक अनकहे इकरार का, एक अनसुनी सी पुकार का। वो सिलसिला था प्यार का तकरार का। नए शहर के दीदार का, मैसेजेस की लंबी कतार का। नए शहर के दीदार का, मैसेजेस की लंबी कतार का, हसीन चेहरे के इंतजार का, पहले प्यार के बुखार का, मासूम से उस इजहार का, अटल सी एक इनकार का। वो सिलसिला था प्यार का तकरार का। लहरों में फंसे मझधार का, इस पार ना उस पार का। लहरों में फंसे मझधार का, इस पार ना उस पार का, एक तरफा इश्क की तलवार का, बहते अश्कों की धार का, गमों की एक बौछार का, रूठा है जो उस यार का। वो सिलसिला था प्यार का तकरार का। किस्मत के कहर हजार का, नफरत के किसी दीवार का। किस्मत के कहर हजार का, नफरत के किसी दीवार का, रकीब पे हुए एतबार का, गहरे से किसी खुमार का, उस बेवफा से यार का। वो सिलसिला था प्यार का तकरार का। So that was it. Can I go ahead with the second piece also? Yeah, you can, but just try and wrap it up soon, please. Yeah, sure. So this one is like, चार साजी से उसकी मेरे दिल का हिसाब हो गया। चार साजी से उसकी मेरे दिल का हिसाब हो गया, मैं कोरे कागज से एक भरी किताब हो गया। चार साजी से उसकी मेरे दिल का हिसाब हो गया, मैं कोरे कागज से एक भरी किताब हो गया। और दो आशिक निकले जहां से तो इस कदर निकले, कि दो आशिक निकले जहां से तो इस कदर निकले, एक चांद हो गया तो एक महताब हो गया। मैं उसकी खातिर भरी बोतल तोड़ आया था, कि मैं उसकी खातिर भरी बोतल तोड़ आया था। उसका हाथ जो लगा पानी शराब हो गया, और एक दिल का दरिया था जो बस बहता ही जाता था।
कि एक दिल का दरिया था जो बस बहता ही जाता था, उसके छूने से वो दरिया बड़ सैलाब हो गया, और यूं तो कुछ बिगड़ा नहीं मैं उसकी फुरकत में, कि यूं तो कुछ बिगड़ा नहीं मैं उसकी फुरकत में, पहले कुछ खराब था और खराब हो गया. So that was it. Thank you. Thank you, Divyam. With this, we come to the end of the open mic. I would like to thank all the performers and the audience for bearing with us for this long. And now I would finally like to hand over to Mr. Anandan from Penguin to launch the book that we've been waiting for. Over to you, sir. Sir, I would request you to please unmute yourself. It was Nishish Chawla who suggested that we should together edit a book on the dark days of the pandemic, a book that should contain poems from around the world, if possible from every continent, which finally we did. In this book, we have more than 100 poets, actually 113 poets, with over 300 poems from Africa, of Australia, USA, South America, and of course, Asia. Practically every continent we have been able to cover. It was when I found myself responding to the new human and spiritual situation brought by the pandemic, that I began to think that other poets also must be possibly thinking about this new situation and trying to articulate their varied responses. I had also to give a lot of talks during these days, virtual talks, obviously, on social, ethical, and aesthetic implications of the pandemic. And I was also writing a few poems, reacting to the plight in my own way. And I began to avidly read whatever came my way. I mean, social thinkers, environmental philosophers, psychoanalysts, and writers who were writing and speaking about the unprecedented context. So I was very conscious of the new social situation, of the new physical, that is the situation of health of the people, and also the psychological situation, because in these periods of isolation, all of us undergo a lot of trauma. So I came across a lot of poems in the print media as well as the social media, which in some way, not necessarily directly or indirectly, dealt with the situation. And I thought that maybe we should put them together, or we should make a kind of selection from these poems. As I said, it was originally Nishi's proposal, to which I responded. So because the situation, we thought, raises a lot of questions about our species, because man had practically withdrawn from nature and from the world around. And strangely, when man was kept behind, I mean, human species was kept behind closed doors, nature was blossoming like anything. I could find, when I looked through the window, new birds that I have never seen in Delhi. I could see new flowers blooming. So I could see the clear sky, which I seldom get to see in Delhi. So there was a flowering of nature, but there was also this kind of imprisonment that all of us went through. And as I said, I was reading Slavoj Žižek, Giorgio Agamben, Noam Chomsky, Yuval Noah Harari, Donna Haraway, Bruno Latour, Manuel de Landa, Francisco Fernando.
Catherine Haides, Rosie Braidotti, Arundhati Roy, Dibesh Chakravarti. I mean, quite a lot of major thinkers who were contemplating over the new situation that mankind had to face now. So some of them thought about economic aspects, the kind of economic depression that it led to. Many of them thought about the psychic aspect, the kind of darkness and gloom that almost everyone passed through during these solitary hours. And some of them, at least, began to rethink the connections, the relationship between human beings and nature. And many of these thinkers, especially Bruno Latour, I remember, suggested that we have perhaps entered a new phase in human history, and Bruno calls it a post-human phase, post-humanist phase. Because in humanism, man is at the very center of the universe. Man is the lord of the universe. While today we find that perhaps we are no more the lords of the universe, but instead it looks like we are being controlled by other forces. Now we are affected by a virus, which has turned all human bodies into photocopy machines, as if, you know. And we also find that nature seems to be in total control of even the human situation. And so somewhere in between, I think we had lost our natural and organic connections with nature. We had become aliens to nature. We were exploiting nature for the profit of a few, but we seldom gave her what we took back. You know, I remember Gandhi saying, you know, the world has enough to provide for everyone, to satisfy everyone's need, but not to answer everyone's greed. Unfortunately, our greed took over, and because of that, we began to exploit nature and gradually exhaust natural resources, and also, in some sense, exhaust our own spiritual kinship with nature. And perhaps nature is now trying to give us a message. It has been giving us messages through floods, through forest fires, through various kinds of epidemics earlier, right from the old bubonic plague and Asian flu and quite a few other epidemics. But we never listened. We went on doing what we had always been doing, exploiting her and making profit. But now we have come to a situation where we cannot afford to ignore the message of nature. That we have to reconnect ourselves with nature. We have to retrieve that organic kinship that we had with nature, and we have to understand that human history is only a very small chapter in world history, and not even a chapter but a sentence in the history of the universe. And so this situation teaches us a lot of humility, a lot of politeness. We begin to understand that human being, after all, is one of the several beings which together inherit the earth, the air, the water. These are not only meant for us, these are meant for trees and plants, these are meant for animals. And so we are only a part of a large biological continuum, and we should no more imagine ourselves to be the emperors of the earth or of nature or of the universe, as we often tend to imagine. And here in this collection, Singing in the Dark, a lot of poets, as I said, more than 100 poets contemplate on this situation in their own different ways, from their own different perspectives, using their own styles, often inventing their own forms to talk about it. Some use short forms like the haiku, 3-line poems. Some use lyrical forms. Some have elegiac tones, and some have odes to nature. So you find all kinds of forms being employed in order to understand what's happening and to interpret the world around us, and also to articulate the kind of situation in which we find ourselves.
And it is in this sense that this anthology becomes not only a reflection of the present human situation, but also a kind of archive for the future of the kind of trauma that the human species passed through for it's almost a year now, for an year, and this will be a great lesson to the posterity, to look back and to learn from and to understand how we tried to grasp the situation, how we tried to cope with it, come to terms with it, how we tried to articulate it, and how we tried to archive it and make it a part of the collective consciousness of the humankind. And I hope this the several poems, the more than 300 poems in this book, will certainly help the future generations gather, understand what happened to the humankind, what happened to nature, what happened to the relationship between nature and man during these days. And that way, we certainly look forward with hope to more and more people reading the book, more and more people telling other people to read the book. And we also hope that this will be a treasure house for the posterity to look back upon and to meditate over the human situation, and also it will help them to survive similar situations which might occur in the future, looking at what's happening around the global warming, what's happening to the ozone layer, and what's happening altogether, as I said, to the organic bond between man and nature. So it is likely that similar things happen again, and then we hope that this book will certainly help the world understand how we overcame the trauma, how we faced it with courage, despite a situation that was almost disillusioning, and how we tried to express ourselves even in this dark situation, express our hope, our dream about another world, a far better, a far more just and egalitarian world. And with these words, I introduce to you this book, Singing in the Dark, and my co-editor, Nishi Chawla, I am sure will have also something to say about the book. And then we will each read maybe a poem or two from the book, and thus we present the book to all of you, students, teachers, and others who have assembled here. Hello. We'd like to welcome Miss Nishi Chawla. She's a writer who has written 6 collections of poetry, 9 plays, 2 screenplays, and 2 novels. We request ma'am to talk more about the book. It's a very fascinating, thought-provoking title, Singing in the Dark. I hope you can see the title of the book as I'm presenting it. In the dark times, will there also be singing? Yes, there will also be singing about the dark times. We chose the title of our anthology from Bertolt Brecht, who is somehow better known to the English-speaking world for his plays. Remember the concept of epic theater? Although it was from his poetry, Brecht's poetry, that he ventured into drama. Well, every social and emotional crisis inspires and fosters creative expression. The poems in our anthology wrestle with the issues surrounding and confronting us now. It's true that having lived through the crisis and the magnitude of this pandemic has changed us all in intangible as well as visible ways, emotionally, psychologically, and socially. In the midst of the hardship and the challenges, there's been the sense among many poets that this period has helped us evaluate our lives and focus on what's truly meaningful. The pandemic has in some ways made us rethink the ethos of social distancing, the barriers that we have always adopted between each other makes us re-examine whether it's true that it is by a very separation that we live and know each other.
The now familiar term social distance initially had an oxymoronic texture. However, several well-known poems about human society recognize that distance plays a role in even our most intimate social moments. Poets remind us that deep feelings of isolation can be contiguous with social interaction, and that sometimes the best thing we can do for our social world is to maintain walls between us and our social bridges. Like the contagion that we are fighting, like the changed social dynamics, the poems in our anthology underscore and highlight how distance structures social life. The most interesting poems are, to my mind, those that address this more complex loneliness. Social distancing is different from more familiar forms of absence. For our purposes, poetry is where social and distance meet in our anthology, and also provides a close analog for what all of humanity is experiencing individually as well as collectively. Of course, we hope our book will be part of our global cultural memory and a global literary history also. Uh, so the anthology Singing in the Dark includes over 100 poetic voices across the globe, responding to and reflecting on these unprecedented times as we are convulsed in and engulfed within the throes of the pandemic. The anthology becomes a kind of extended meditation on the very nature of our present reality. Amidst a pandemic, the diverse community of poets from across the globe that we have selected have expressed their sense of transformed reality in acutely sensitive images and tormented poetic words. So the poets have enacted a kind of alchemy in language that's variously exhaustive and intense to make the anthology a powerful and urgently necessary examination of a very challenging and difficult time for all of humanity. The poems offer a variety of modes and tones. Some are conversational, others are profound, some are precise, others expansive, meandering, morose. There are moments of great beauty in many poems, and each poem has its own unique tone. And yet, these poems tell the story of an anxious, almost a claustrophobic world on pause. The lockdown has transformed our lives and, in some ways, unlocked our inner world. And as we are confined to our homes, the future feels very uncertain. As we live through this unique history, the anthology becomes a record of our thoughts, our existential questions, concerns, and experiences of living through the pandemic. These poems are personal narratives and testaments, often therapeutic, sometimes sad and angry, or funny and optimistic, a kind of outlet of our fears, hopes, and joys, helping us make sense of this new world order and our place in it. Thank you. Can you see me? Yes, ma'am. Thank you so much. Can you see the snow outside too? Yeah, we can. Okay, okay. We could now proceed with the performing. Sir, I would like you to unmute yourself, please. Yes, sure. We shall each be reading a poem from this anthology, our own poems, and if there is time, maybe a few by other people. I shall read one of my poems. I have 3 poems in the anthology. One of my poems, joy is a narrow space between 2 sorrows, a space lit by the morning sun, where a sunflower is in bloom amidst fresh
blades of grass that two people can hardly occupy, and maybe a pale butterfly too. You can dance there with movements and gestures possible in that narrow space, and sing in a low voice, can even laugh mildly, tickling the baby sunlight. But there is little time. You know it too. The sun will soon grow harsh. Sorrows will squeeze you from both sides. You may even get trapped there, never able to get out. When the whole body bleeds, you may suspect that joy is but a snare. It is not all wrong, but you were able to see the flower and dance. But pain, it is eternal and its space infinite, like the abyss that once trapped the earth. You will have to leave the earth to see there are stars even there. Who knows? Your soul may fly across many light years to land in a star. It will gain a new body there. Then you will know joy is but a narrow space between two sorrows. Thank you. And over to Nishi. Ma'am, we're not You're able to hear you. Yeah. You have to unmute, Yes. unmute. Yeah. Yes, sorry. Yes, you told me to mute myself, so I did. And then in the process. Well, I'm going to read a poem that is not published in our anthology, but that I wrote subsequently. It's titled Vera Virus. Glossing over our vulnerable lies, we hurl rocks and they fall like petals. They inhabit our relentless habits, rupture wrong after wrong. So we wrestle our own shadows in defiance. A living curse we float nimbly, go around, conjuring a virusless world in motion. We choose ultimatums in feasts of praise, reckless. We try using beneficent bullets, seek bright shelter in lonely outlines, isolated rhythms pulsating, dazzling, glorious triggers of disallowed desire, shaping us as primordial escorts. We are plunged into the littlest of beings, barbarous, graphic nostalgia sucks in. Unfettered we fly, enveloped by gargantuan gods that swirl in alchemy alongside, dishonored, replaced. Thank you. Thank you so much. With this, we come to the end of the book launch, and I'd like to thank you all for joining in. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. We can now leave the meeting. Thank you. Yeah, sure. Yeah. Thank you. Thank you, Nishi, for joining, and thank you.